is big Bihar cabinet scoop on India Today that we bring to you. Nitish to take oath as Bihar's chief minister for the 10th time. 2 deputy chief ministers to be sworn in from the BJP camp. Also, another important scoop that's come in is that 7 other BJP netas are to take oath as mantris within the cabinet. 6 netas from the JDU camp are to take oath as ministers as well. 1 from the Chirag camp, 1 mantri from HAM and 1 from the RLM. This is the update that we bring to you with regards to the oath ceremony as to how the cabinet formation will be, or rather what the cabinet formation will be looking like at this point. Rohit Singh joining me on the broadcast to bring us more details. Rohit, these are the numbers that we are picking up in terms of which camp will have how many representatives within the cabinet. Yes, see, 11:30 is the time when the swearing-in ceremony of Nitish Kumar will take place, and what we are learning is that along with Nitish Kumar being sworn in as CM, Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha will also be sworn in today, and along with that about 20 other ministers will be sworn today. And what we are learning is that there could be 8 to 10 from JDU camp, some 8 to 9 from the BJP, and 1 each from Chirag Paswan's party, Jitan Ram Manjhi's party, and 1 from the Rashtriya Lok Morcha of Upendra Kushwaha. They could be sworn in. So altogether there could be like 20 to 22 MLAs who could be sworn in as ministers today in the swearing-in ceremony, which will be attended by Prime Minister Narendra Modi. Will be there, Amit Shah will be there, union ministers, several union ministers will be there. Almost all the chief ministers of the BJP ruled states will be attending this event. And remember, Amit Shah arrived yesterday night only in Patna and held late night consultations to finalize the names for all those MLAs who will be inducted in the Nitish cabinet. And he held talks with the top BJP leaders as well as JDU leaders like Sanjay Jha and Lalan Singh. So we believe that everything now has been sorted, and in some time from now the phone calls will start ringing of those MLAs who are supposed to be or who are to be inducted in the new cabinet today. So there will be calls that will be going from the Chief Minister's house to them to get ready for the swearing-in ceremony. And another one we believe that the names of all those MLAs who will be inducted today in the cabinet and who will be taking oath, the names will start trickling. Back to you. Names will start trickling in just another few hours, as you have mentioned, Rohit. Rohit, initially when the equation had come to the forefront, we had in fact brought this to our viewers here itself, that it was a 6-to-1 ratio that they were following for the ministerial berths. And now we see that all has been sorted. The numbers that are coming in, 7 BJP mantris other than the deputy chief ministers who will also be from the BJP, 1 ministerial cabinet to the RLM, 1 to Chirag Paswan's camp and 1 to the HAM. Those are the numbers we are picking up roughly at this given point. See, that formula was was derived that for every 6 MLAs, 1 ministerial berth will be given to each and every party, is a formula that is on a macro level. But today all the ministerial berths will not be occupied today only, because remember there are only 36 ministers who can be sworn maximum in the Bihar government. So today what we are learning is that about 20 or roughly about 21 or 22 will be sworn in as ministers today, and that the formula that has been reached, on the basis of that, overall BJP could have 14 to 15 ministers in the government, some of whom may be inducted at a later stage. JDU will also have 13 to 14 ministers. Based on that formula, Chirag Paswan likely to get 3 ministerial berths, 1 each for Jitan Ram Manjhi and Upendra Kushwaha's party. Back to you.
So those are the final numbers that we are given to understand. But for today, these are the numbers, viewers, that we are bringing to you at this given point as to who all will be sworn in from each of the camps and parties within the NDA. Rohit, thank you. And we'll keep coming back to you throughout the day for all the updates that are coming in from the ground there. But at this point, viewers, let's take you through all that's happened to culminate to this very point, to this very day, the big oath ceremony day for Bihar. Patna's iconic Gandhi Maidan gears up for a landmark political moment as Nitish Kumar prepares to take oath as Chief Minister for a record 10th term today. Bihar will in fact be continuing with its dual Deputy Chief Minister model led by Samrat Chaudhary and Vijay Sinha. Now, meanwhile, if we talk about Bihar's capital, it is buzzing as NDA leaders are thronging the city for the grand oath ceremony. Prime Minister Modi will be attending the oath ceremony, and Prime Minister as well as Nitish's chemistry is expected to be in full display. Now, apart from Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, BJP Chief JP Nadda, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Andhra Chief Minister Chandrababu Naidu, and several other chief ministers from the BJP-ruled states will be attending this very event. Now, several leaders from the NDA camp, let us tell you, are also in fact expected to take oath today, news about which is constantly coming in with updates as we bring to you right here. मैं एक बार फिर बिहार वासियों को अपने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जिस प्रकार से उनने अपने मन के आधार पर सुशासन की सरकार को चाहा और उनके मनमर्जी की सरकार बनी, मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। बिहार प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर बिहार ने मोहर लगा दी है। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार पदारूढ़ होने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और पूरे मंत्रिमंडल को, जो आने वाला मंत्रिमंडल है, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। बिहार के इतिहास में और भारत और दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लेंगे। और ये जो दौर होगा बिहार का, ये सचमुच बिहार का एक स्वर्णिम काल होगा। बिहार का सौभाग्य है कि बिहार को सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री बिहार के पास हैं। पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, पूरे देश और दुनिया के नेता देखेंगे। बिहार की सरजमी पर कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई राज्य के मंत्री सब लोग रहेंगे और प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी। लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतरना है। बहुत उम्मीद लगाई है बिहार के लोगों ने, उस उम्मीद पे खड़े उतरना ये सरकार की चुनौती है और इसको सरकार ने स्वीकार किया है। सर, जो रिजल्ट है इलेक्शन का उसका सम्मान करते हैं। हो गया, सरकार बन रही है, तो जो जो वादा किया उसको पूरा करें और सरकार बन रही है, इसके लिए बधाई उन लोगों को। लेकिन मैंने इलेक्शन के दौरान भी कहा था, आज फिर आपसे कहते हैं, ये जो नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, ये टैक्टिकल है। अभी बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, उसके बाद इनको धकिया करके बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। Now, viewers, ahead of the grand swearing-in today, India Today's Maria Shakil spoke to JDU legislative leader KC Tyagi. Listen in to what was said. JDU leader KC Tyagi now. Mr. Tyagi, you have worked with Nitish Kumar for nearly 5 decades. Many say that Nitish Kumar is a political necessity for NDA. देखिए, नीतीश कुमार जी से जेपी मोमेंट 1974 का मेरा परिचय है। जनता पार्टी बनने के बाद हम जनता दल का जो युवा संगठन था उसमें दोनों ने साथ काम किया। फिर हम चरण सिंह जी के नेतृत्व वाले लोकदल में रहे, फिर कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे, फिर वीपी सिंह जी के साथ रहे और उसके बाद फिर लालू एरा बिहार में शुरू हुआ और उसके पैरेलल ही नीतीश जी का भी युग साथ साथ शुरू हुआ। 1990 के चुनाव में लालू यादव नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा करते थे,
लेकिन लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक परिवर्तन हुआ। उसमें नीतीश जी को लगातार कम करके आंका गया और इग्नोर करने के प्रयास किए गए, और यही वो दौर है। असल में हम कोई श्री कृष्ण सिंह से तो तुलना कर नहीं सकते किसी की, को तो हमारे से पहले का ज़माना है। तो लालू युग और नीतीश युग, दो युग हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और दोनों में बहुत ही क्वालिटेटिव, पॉलिटिकल भी और कल्चरल भी, दोनों में बहुत दूरी है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं 2014 में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, तो बिहार की जो सबसे दलित कम्युनिटी है, माझी समुदाय, उसके आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने भाई और बेटे को नहीं बनाते हैं। लालू जी जब 1996 में इस्तीफा देते हैं चारा घोटाले के बाद, तो वो विजेंद्र यादव जी को या किसी और को नहीं, नीतीश कुमार जी तो खैर अलग हो गए थे, लेकिन वो अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक दूसरा, परिवारवाद के साथ साथ विकास का भी एक बात है। लालू जी के साथ मैं, शरद यादव जी, रामविलास जी, नीतीश जी, हम सब लोग एक युग के साथ काम किया है। लालू जी के एजेंडे पे कभी था ही नहीं विकास। वो कहते थे सामाजिक समीकरण ठीक करो तो सब चीज़ हो जाएगा। 2005 में जब नीतीश जी आते हैं तो बिहार पहली बार विकास की बयार देखता है।